Good morning, students. We are continuing with the next question, that is fifth question. Here, one of the most important topic is given: splitting middle term, factorizing by splitting middle term. This is applicable for quadratic equation only. Quadratic. Quadratic equations, or you can say equation when equality comes, then equation, otherwise it is polynomial. This is one of the important topic, and if we have learned this in 8th class, and now also we are doing this. Here quadratic equation means degree is 2, or you can say the highest power of the variable will be 2 only. So I'm taking first example, that is 4x square minus 17x minus 21. Quadratic polynomial because highest power of the variable, that is 2 here, and there will be 3 terms only here. What you need to do, we need to split this term. How we need to split it? In such a way, the product of 21 and 4, that is 21 into 4, that is 84. इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, जो दो फैक्टर में स्प्लिट करना, वो दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट 84 आना चाहिए, और उन दोनों फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन करने से 17 एज इट इज़ हमारा रहना चाहिए. सो हाउ कैन वी फाइंड? इसके लिए मैंने एक वो बताया करता हूँ कि सबसे पहले ये देखते हैं कि 84 ऑब्टेन कैसे होता है. आइदर 84 इंटू 1 और 42 इंटू 2 और 3 इंटू 28 into 3 or 21 into 4 and 5 6 ja also 14 and 7 ja also. There are no other way to obtain this. So out of these pairs, either this pair will be the factor, or this pair will be the factor, or this pair, or this pair, or this pair, or this pair, any of these two. क्योंकि इन सब की प्रोडक्ट 84 है, तो प्रोडक्ट से हमें नहीं, बस इनसे ये होना चाहिए कि इनके प्लस या माइनस करने से हमारा 17 रहना चाहिए. हियर 21 माइनस 4, दैट विल गिव 17, सो दीज कैन बी द फैक्टर. और यहाँ पे कहा है 21 माइनस 4 कहा है हमने, तो इसका मतलब इन दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए. सो इट मीन्स if I take 21x as negative and 4x as positive, it will give 21 into 4 84, minus into plus minus, because 4 इंटू माइनस 21 दैट इज़ माइनस 84. हमें माइनस 84 प्रोडक्ट चाहिए, और जो इन दोनों के करने से हमें आ भी रही है. और माइनस 21 में से हम अगर प्लस 4 ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज माइनस 17. ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड. सो यहाँ पे इसके बाद हमें करना, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है. फर्स्ट 2 में व्हाट इज़ कॉमन? x इज़ कॉमन. सो what else is common? Nothing. 4x is remaining because यहाँ 2x हैं, एक x common हुआ, remaining is here. From here x has gone, only 21 is remaining here, plus what is common? Nothing is common, then 1 is common. If 1 is common, then nothing will change and it will be as it is. Further, this factor is common between this complete term and this complete term, so 4x minus 21 into x plus 1. So these are the factors. One more example, let us cover this with one more example. That is second question we are taking. 10x square plus 3x minus 4, that is given. So what we need to do is we need to split 3x in such a way, 10 into 4 minus 40. सो हमें इसको स्प्लिट करना है सो दैट कि हमारे पास माइनस 40 आ जाए. ऐसे दो नंबर ऐसे लेके आने जिनका सम 3 रहे और उनके प्रोडक्ट 84 आ जाए, 40 आए. तो 40 देखते हैं सबसे पहले ऑब्टेन कैसे होता है. अदरवाइज आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं, नीड नॉट टू डू दिस इज जस्ट फॉर हेल्प. दिस इज 20 इंटू 2 ऑल्सो, एंड 4 इंटू 10 ऑल्सो, 5 इंटू 8 ऑल्सो. देर इज़ नो अदर वे टू फाइंड दी 40. यही हमारे इसके फैक्टर्स हैं. सो यहाँ से हमें ऐसे कौन से जिनके प्लस करने से या माइनस करने से हमारा 3 ऑब्टेन होता है. इन दोनों के प्लस करने से 41, माइनस करने से 39, प्लस करने से 22, माइनस करने से 18.
एडिशन से 14, सब्ट्रैक्शन से 6 नहीं फुलफिल हो रहा है। इनके एडिशन से 13 आता है और सब्ट्रैक्शन से 3 आता है, मीन्स दीज आर द फैक्टर्स। इनकी प्रोडक्ट 40 है, ऑलरेडी एडजस्टेड। इनके सब्ट्रैक्शन से हमारा 3 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, तो दे विल बी हैविंग ऑपोजिट साइंस। 10x², डिपेंड करता है हमें 3 किसका चाहिए, प्लस का चाहिए तो प्लस हमें ज़्यादा रखने होंगे। -5x -4, these are the factor, their product is 40 प्लस इंटू -40, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा +3 ऑब्टेन भी होता है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। सो व्हाट इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन बिटवीन दीज 2, 2 5 जा 2 4 जा, एंड x इज कॉमन here, 2 has common, so 5 is remaining, 1 x is remaining. From here 2 has taken common, 4 is remaining. Here nothing is common, so 1 is common. Also I am taking minus sign also common. If I have taken minus common, so both of the sign will change. Here it was minus, it will change to plus 5x. It will also change to 4. एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, दीज टू फैक्टर विल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर ये नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू सी द क्वेश्चन अगेन। सो 5x + 4 again common, 2x - 1, these are the factors. This is how to factorize the quadratic polynomial by splitting middle term. Sixth question is also the same. You need to factorize the question. There are 2 parts given, you need to factorize. One will be the length, second one will be the breadth. Sixth question you need to do. In a 7th question, I am taking 7th question, one of the example, only 2 question, first 2 question you need to do only. I am writing first one. Statement is given, we need to factorize the expression given below, और उसमें क्या है, algebraic expression expressible as sum or difference of 2 cubes, means either that will be sum or difference of cubes. ये cube और their sum, cube and their difference, means कि this expression will be expressible as this, means this part is given and this is equal to, as we have, you need to remind the identity, that is a square plus b square minus ab. If it is plus, then minus will be here. If it is minus a minus b, a square plus b square plus ab. These are the 2 identity which will be applicable in all parts of 7th question. I suggest you can do first, second, third and 4th question also you can do. Even 5th question is also the same kind. As many you can do, you will proceed. Here I am taking this one. Directly I cannot say this is expressible as the cube, because this is not the cube of any number, this is also not cube of any number. And taking to the next page, 8 is cube of 2, but a raised to power 5 ये भी क्यूब नहीं है. b square is also not a cube of anything. It is square of 3. a square क्यूब नहीं है, b raised to power 5 क्यूब नहीं है. बट अगर हम देखें यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, least power of a square is common, b square is also common here. If I take a square and b square common, what is remaining, 8 is remaining. a square common है तो a raised to power 3 is remaining here. b square common आ चुका है, plus 27. a square has been taken common, b raised to power 5, remaining is b raised to power 3. Now this can be expressed as cube of 2 numbers, like 2a whole cube, that is 8a cube, plus 3b whole cube. Now this expression is similar to a cube plus b cube, and this will be equal to a plus b into a minus a square plus b square minus ab. So now this factor we have, we need to just write this. Which one is a, which one is b? This complete is a, this complete is b. So writing this is identity. Sometimes we get confused with this is also ab, this is also in ab. If it is in ab, then write it in xy. If it is in xy, then write it in ab to differentiate. So here a cube b square, that is as it is. So here this factor can be written as a plus b. First of all, a plus b, what is a? 2a plus 3b into a square. A square means 2a whole square plus 3b square
माइनस 2a इंटू 3b। समटाइम्स ये टर्म्स हमारी थोड़ी पहले लिख दी जाती है, ये वाली टर्म्स बाद में लिखते हैं. देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देर इज़ नो डिफरेंस इन इट. So as you remember the identity, you can, this is bracket, this bracket get closed here. So here a cube b square, this is one term, 2a plus 3b, this is one term. Here 4a square plus 9b square minus 6ab, these are the factors. In this way you can proceed all. I am taking third part. Third is different, otherwise up to eighth question, eighth part, seventh question, eighth part, you can do all the question in this way. Only third question, that is little bit different, little bit, there is not much different. 27a cube, third part I am taking, that is plus 8b cube minus 9a minus 6b. So here एज वी हैव सीन ओनली 2 टर्म्स वाज हियर, और 2 ही टर्म में हमारी आइडेंटिटी होती है, बट यहाँ तो 4 टर्म्स है हमारी. बट कैन यू सी, इन 2 को हम सेपरेट लेते हैं, इन 2 को हम सेपरेट लेते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब, इट वाज ए क्यूब एंड इट इज ऑल्सो बी क्यूब. सो इट इज क्यूब ऑफ 3a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब, सेपरेट माइनस, इनको माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 9a प्लस 6b हो गए हैं, इसको सेपरेट लिया हमने. नाउ दिस इज द आइडेंटिटी. Now this time I am not writing this identity, but you in your fair notebook you need to write in every question directly. A cube plus b cube I have, so 3a plus 2b into a square, 3a square plus b square, b is 2b minus 3a into 2b. This I have closed. Now minus 9a plus 6b, this is remaining. One more thing you can do here, that is 3 is still common here. If you can take 3 common here, if I take 3 common, it is 3a, it will be 3a and 2b if you take 3 common, so that it will be okay, I will write it later on. So 3a plus 2b into 9a square plus 4b square minus 6ab. Here I took 3 common, that is 3a plus 2b. This term and this term, because there is minus sign, so these are 2 separate terms, they have still 3a plus 2b common. So again I am taking 3a plus 2b as common from this term. If this has been taken common, then what is remainder? 9a square plus 4b square minus 6ab, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर है -3 only. So this is the factor of this. This is little bit different, otherwise up to 8th part you may try. 5th, 6th and 7th question up to 8th part you may try. Thank you.